Hello guys, good morning. A very good morning to all of you. I'm Saba, your English faculty at Oliveboard. So quickly confirm me if I'm audible and visible to you all. एक बार कंफर्म कर दीजिए क्या सभी लोगों के लिए सेशन लाइव हो चुका है? Good morning Kumaran Ram, good morning Dinesh, good morning Saurav, good morning everyone. I guess the session is streaming, right? Good morning Susan. Susan, where were you? I'm seeing you after like quite time. Thank you Saurav for confirming. Good morning Anshul, good morning everyone. Thank you Kumaran Ram, thank you everyone for confirming. Uh, See, today's session is going to be about it is going to be very rich in terms of idioms. आज के सेशन में आपको idioms काफी सारे मिलेंगे. I don't think कि इतने ज्यादा idioms आपको एक पर्टिकुलर आर्टिकल में मिल सकते हैं. But in today's session, like in today's editorial, you can say कि you are going to get a number of article, okay? Number of idioms you are going to get in today's session. Clear? Good morning, Sangeeta. Good morning, Sonali. Good morning, Neeraj. Good morning, everyone. So let's start today's session. If I talk about homework, so Ankush did the homework, Suresh, Prateek, Subodh, Purv, Amit Kumar, even many new students are Sanjeev Kumar, Neeraj Sharma, Anshul Kumar, Shailendra Kumar, Prasanjeet, Madhurima, Udit Arora, Sonali, Kumaran Ram, A, Devashish, Arju, Sabri. All these people did the homework. Oh, 1 second, let me check. 1 second, guys, 1 second, let me check. I guess now everything is okay. Good morning, Arju. Good morning, everything. Good morning, everyone. I guess now everything is okay. Let's continue. Okay. So we will start today's session with motivation quote, and today's quote is related to English vocab. Okay. आज का quote जो है that is going to be Suprabhat Priyanka. Good morning, everyone. Sonali, what was your doubt? I didn't get you. Sonali, can you please post your question once again? What did you ask? I didn't get you. So today's quote is based on vocab that a man with a scant vocabulary. Scant means few vocab. Scant you know little. Scant का मतलब क्या होता है थोड़ा. Scanty से ये word बना हुआ है scant. Okay. Scanty you know meager. So the same is the meaning of the word scant. Vocabulary will almost certainly be a weak thinker. It means if you don't have very good vocabs, if you are not very much good at vocab, देखिए vocabs it is limitless. We can't say that I have learnt all the dictionary, I know each and every word. No one can claim that. कोई भी claim नहीं कर सकता. What matters is कि आपके पास कितनी ज्यादा vocab है. आप दूसरों के कंपैरिजन में आप कितने ज्यादा वर्ड्स याद किए हैं, आपको कितने वर्ड्स पता हैं. And vocab, as per me, it is not a thing to learn. Vocab is a thing to use. आप देखेंगे आज के भी आर्टिकल में आप देखेंगे कि जो वर्ड आपने बहुत बार सुन रखा है, जो बार बार आर्टिकल में रिपीट होता है, those words you will easily memorize because those words you are hearing every time. मतलब you are listening to those words every time कि every now and then you listen to those words. So for remembering those words, it is not a tough task for you. आप easily उन सारे words को memorize कर सकते हैं. Whenever we get a new word, so it depends upon you that how many times you are going to use that word in a sentence of your own. या फिर आप कैसे भी कहीं पर भी whatever you are speaking या कहीं पर भी try to use those words. Okay. Yes, weak thinker, weak communicator, everything. Because if you don't have good vocabs, so of course you won't be able to express your ideas because you won't be able to think. So अगर आप think नहीं कर पाए, if you won't be able to think, if you won't be able to generate new ideas, so of course you won't be able to communicate also. So this is the power of vocab. It is not only for examination point of view, overall in your life it is going to help you. Right, Saurabh? Absolutely true. So I hope you will focus on improving your vocab, and the best way to improve vocab is through newspapers, editorial sessions, reading.
Not only newspaper. See, you can newspaper is such a medium that where you get vocabs of all the genre. कि जैसे अगर आपने रोमांटिक स्टोरी पढ़ी या कुछ भी ऐसे आपने नॉवेल वगैरह पढ़े तो यू आर गोइंग टू गेट वर्ड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉनर ओनली बट न्यूज़पेपर मींस यू कैन गेट vocab related to science, you can get vocab related to environment, you can get related vocabs related to sports, all these terminologies you get, economy, everything. So that's why we prefer कि reading newspapers or attending editorial classes are going to help you in this way. So yes, good morning, Pankuri. Good morning, everyone. Now we will come to our today's tutorial session. Those who have not subscribed to our YT channel yet, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर YT चैनल. एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन विथ मैक्सिमम. इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए गाइस, so that maximum students can also attend. Okay. And if you have not downloaded the app, please download it once. अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया Oliveboard का तो प्लीज डाउनलोड इट वंस. ओके. सो वी विल हैव ग्लिम्स ऑफ टुडे सेशन. क्या क्या करने वाले हैं? रिवीजन सेशन, जो भी vocab हमने कल देखा था, vocabs, idiom, phrases, phrasal verbs, all these things we are going to revise today. सारी चीजें रिवाइज करेंगे. vocabs of today's session, आज के सेशन के जो वर्ड हैं, idioms and phrases, very 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 important. As I said in the beginning itself कि आज का जो सेशन है वो idioms and phrases के टर्म्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Okay. Phrasal verbs also we have complete analysis of today's article. And today's article, I guess those who are regular, जो लोग regular session attend करते हैं, they will be able to understand this article very well because it is something that we did last week. उसी का continuation है. And this article in itself is very very important. Very 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 important article. इससे related एक article हमने last week भी किया था. Now again this week we have something related to the same article. Okay. Tone and objective as usual, and grammar, and then practice exercise, that is homework. All these things we are going to do. So one more thing I have observed, when I correct your homework, whenever you people post the homework, I try to correct those I try to make the corrections also कि जो अभी sentence form किए हैं क्या क्या उसमें गलत है. अगर बहुत ज्यादा गलत होता है, like कि correction करने लायक ही नहीं होता है, the entire sentence is incorrect, it is not making any sense, so I ask you to reframe that sentence, and if it is minor mistake then I try to correct that. प्लीज ट्राई टू गो थ्रू दोस करेक्शंस बिकॉज अगर आपने करेक्शन नहीं देखा कि मैंने क्या सजेशंस दिए हैं, सो ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव बिकॉज यू वोंट बी एबल टू कम टू नो कि आपने क्या मिस्टेक किया है. So there are very few only those who go through the corrections. So it is again a request to all of you, suggestion for all of you, that please once I have done the homework, whenever you get time, so just try to check, go through that ki whether your sentence was correct or there were few minor mistakes in your sentence formation. Okay. So I hope you will do that also. Now let's start revision session. Sonali, what happened to you? I didn't get you. क्या डाउट पूछा था आपने जो मुझे नहीं मिला? So let's start revision session. As usual, you have 30 seconds. Quickly, guys, let me see who gives the correct reply. Fast and correct. Everyone be very active. फटाफट से करेक्ट रिप्लाई दीजिए. I 30 seconds over, guys. Please hurry up. No one replied till now. As usual, Arju gave the first reply. Deleted also. It is not tough. Why you people are taking time? 56. Yes, Susan, this is the thing that we have always done. Correct. No, E is incorrect, Susan. D is correct. Now let me discuss. I guess you people are facing problem. Correct, 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 correct. Now listen to me. आज इतना टाइम क्यों लिया आप लोगों ने? आई डोंट नो.
torrential word I told torrential basically we use for heavy, something that is very much, बहुत ज्यादा है. So torrential can also carry the sense of copious, because copious also we call to abundant. मैंने आपको सीधे सीधे यूसेज बताया था. Torrential rain we say that we use for heavy rain, right? So torrential word will be matched with third, that is copious. Torrential copious से match करेगा. Board we call to foretell or predict. So B will be matched with fourth. Board means foretell, predict, किसी भी चीज को पहले से बता देना. Foreboard also you can say. So all these are the synonyms of board, that means foretell, predict something. Okay. Then we have the word vagary. Vagary basically we call to fluctuations. This we use for fluctuation of mood also. जिसके लिए मैंने कल word बताया था, capricious, whimsical. So all these can be related to vagary. मतलब fluctuation of mood is also called vagary. So C will be matched with first, right? Correct, correct. Yes, capricious, whimsical. Then we call so many words we have. Fickle-minded. All these words we have. Okay. Fluctuation. Generally, it is fluctuation. Underline. This word we saw so many times. Underline. बहुत बार हमने देखा. Yes, idiosyncratic also you can say. Whimsical. All these words are. Underline means what? Emphasize. किसी भी चीज को emphasize करना, underscore करना, that is called underline. So D will be matched with sixth. Okay. Inevitable, something that cannot be avoided, unavoidable. So you can say inevitable means certain, जो होके ही रहेगा, जो निश्चित है. Unavoidable you can say. So that is called inevitable. E will be matched with seventh. Yes, E will be matched with seventh. Very good, Geeta Singh. Very good. The underline also means underscore, emphasize. Very good. Yes. Debilitate means enfeeble or weaken something. किसी भी चीज को कमजोर कर देना, that is called debilitate. It is a verb. So enfeeble, F will be matched with fifth. And downstream, as per yesterday's article, it means something happening at later stage. कि कुछ ऐसी चीजें जो बाद के स्टेज पे परफॉर्म की जाए, that is called downstream. So yes, G is will be matched, right? See, weak, fragile, these are adjective. See, there is a difference between weak and weaken. Weaken का मतलब कमजोर करना, and weak means it is an adjective. So remember these differences. ये differences याद रखिएगा. Weak we called fragile, adjective जिसके पास power कम होता है, that is called weak. Now let's start to sorry, revision of phrases and phrasal verbs. The phrases that we saw yesterday. So the first one was put out of action. Put out of action means make one unable to perform a usual function. Now see. Yes, highlight, emphasize, all these are the synonyms, Dinesh. See, put itself is a verb, my dear. तो जब ये verb है तो आपको इसके पहले फिर से कोई verb use करने की जरूरत नहीं है. It looks very odd. जैसे अगर आपने एक sentence frame कर दिया, he make me put out of action. He made put out of action. This is what? This is something blunder. It sounds blunder. Because put in itself is a verb, so you have to use it as a verb. You don't need any other verb before it. So it means make one unable to perform a usual function, to restrict someone, to stop the movement or action of someone or something. So that is the meaning of put out of action. To restrict, prohibit, all these can be the synonyms. Then the next word we have is wash away. Wash away, remove away, carry away, or get rid of something. So it can be used for getting rid of something, washing away, washed away, all these can be used. Remove away, carry away is also the meaning. Then we have factor in, a very, very important word. Now see, I saw few sentences. See, factor is a noun also. Important factors in something. So their factor is what? It is a noun. Here in this sentence, factor means what? It is a verb. So you have to, yes. Sure. So you have to use, अगर आप factor इनको as a noun use करेंगे तो you won't get this meaning. You might frame a grammatically correct sentence. आप grammatically correct sentence तो frame कर सकते हैं. ये meaning, ये जो आपकी phrasal verb की meaning है, you won't be able to get this meaning. So factor in as a phrasal verb, it means include something in calculation or consideration. While calculating anything, while planning anything, you have to include a few important points. So that is called factor in. Okay, a good phrasal verb it is. And then we have adhere to, it is very common, stick to or hold firmly. So this was all about yesterday's session. ये सारी की सारी चीजें आपके कल के सेशन की थी. Let's start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. Okay.
So the first word of today's session is reversal. रिवर्सल बेसिकली वी कॉल टू टर्न अराउंड और चेंज. ये जो यू टर्न होता है ना, आई होप यू ऑल नो यू टर्न. पूरा मतलब आपने यहां से स्टार्ट किया था, आप वापस यहां पर आ गए हैं, तो कंप्लीट चेंज इज कॉल्ड रिवर्सल. रिवर्स वर्ड यू ऑल नो, रिवर्स का मतलब होता है चेंज. सो रिवर्सल इज ऑल्सो द सेम थिंग दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड और चेंज. क्लियर? It is used as a noun. Reversal is used as a noun. Then the next word we have is repeal. Now see, repeal has so many meanings. It is a verb. हमने इसके लिए वर्ड देखा था nullify, invalidate, quash. तो all these are किसी भी चीज को खत्म कर देना. Repeal law. Always you might have heard repealing of law या repeal law. It means कोई भी law, कोई भी order पास हुआ है, तो उसको nullify, not revoke. Yes, you can say. Yes, resign. Yes, correct. So it means nullify, invalidate, quash, all these, void, all these are the synonyms of repeal. Okay. As a verb, you can use this word. कि किसी भी चीज को counter, you can say, right? Counter, all these are the synonyms, right? Resign, all these are synonyms, right? Then we have the word foil. Foil basically we use for derail, prevent और defeat. ये भी वही होता है किसी भी चीज को restrict करने के लिए. टू रेस्ट्रिक्ट समवन, किसी के भी एक्शन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए. देखिए, एक रेस्ट्रिक्ट के लिए, एक नलिफाई के लिए वी हैव नंबर ऑफ वर्ड्स, वी हैव सो मेनी वर्ड्स फॉर दीज थिंग्स. ओके, so foil we can use for derail, prevent, defeat, all these are the synonyms. It is used as a verb. Okay, derail, you know, curtail, derail, prevent, defeat, all these can be the synonym. That means restrict, किसी के भी मूवमेंट को या किसी के भी एक्शन को प्रोहिबिट कर देना, that is called foil. Then next we have rehabilitation. Put out of action. Very good. Right, Usain? Right now we saw one idiom that is put out of action. So foil also means put out of action. Derail, prevent someone. Okay. Rehabilitation. This also we saw as a verb in yesterday's session. So not yesterday's, day before yesterday's session, we saw rehabilitation as a verb. हमने इसको as a verb देखा था. Here it is as a noun. Rehabilitation centers we have. I hope you all might have heard rehabilitation centers. This we have for lunatic people also. जो पागल होते हैं उनके लिए भी we have rehabilitation centers कि जहां पर उनको उनके वापस फॉर्मर कंडीशन में लेके आ जाता है. This center we have for criminals also. ये मैंने बताया था. So rehabilitation means restoring the former reputation. ये पर्सन के केस में इट इज अ डिफरेंट थिंग कि पर्सन को वापस उसके फॉर्मर स्टेट में लेके आना, फॉर्मर कैरेक्टर, फॉर्मर पोजीशन में लेके आना, दैट इज द मीनिंग. बट हियर इट मींस रिस्टोरिंग टू फॉर्मर रेपुटेशन. सपोज आपने अपनी रेपुटेशन खो दी है, ऐसा हो गया आपके ऊपर. जनरली पॉलिटिक्स वगैरह में होता है कि कोई भी करप्शन का या कोई भी चार्ज लग जाता है. नो, वंस योर ऑल दोस एलिगेशंस आर लाइक wrongly proved and other things, so you are rehabilitated. It means आप वापस से अपने former reputation को पाते हैं. So that is also the meaning of rehabilitation. It is a noun. Yes, for drug addicted, correct. Rehabilitation centers we have. Apprehensions, we have fear, anxiety, nervousness. Apprehension we have for fear, anxiety, nervousness, that is called apprehensions. We say apprehensive. I'm quite apprehensive. So apprehensive means what? आप डरे हुए हैं, आपको किसी भी चीज को लेकर के you are doubtful. Okay, you are not very much sure about anything. So that is called apprehensive. Okay, fearful you can say. Adjective it is. So apprehension is a noun. It means fear. Apprehension is a noun. It means fear. Then we have disband. It is a verb. Disband means dissolve, scatter or separate. जैसे आपने कोई ग्रुप फॉर्म किया, okay, but after that you have disbanded that group. It means you have dissolved that group. आपने उसको हटा दिया, खत्म कर दिया, scatter कर दिया, separate कर दिया. You formed a party, but again आपने उस पार्टी को क्या कर दिया? Disband कर दिया. So disband word basically we use in that term, dissolving, scattering और separating. कि अलग अलग मतलब चीजों को एक बार unite अगर आपने किया तो उसको अलग कर दिया आपने. So that is called disband, dissolve, scatter or separate. Then we have saga. Saga word is a noun, and this I hope you all know. This we use for story or tale. Okay. So yes, story tale, that is called saga. Then we have the word friction. Friction तो आपको physics के terms में you all know friction. What is friction? But in English, as per the article, friction means what? Dispute, discord, disharmony.
डिसएग्रीमेंट, जहां पर आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, राइट? Yes. So friction we use for dispute, discord, disharmony, conflict, all these are the synonyms of friction. Okay. Bone of contention, apple of discord, all these can be said. Bone of contention, apple of discord, idioms, yes. Then we have erring. See, word you know. Is a verb that has been derived from the noun error. एरर का मतलब आप सबको पता है, मिस्टेक, स्मॉल मिस्टेक इज कॉल्ड एरर। जैसे स्पॉटिंग एरर कोई बहुत सीरियस मिस्टेक्स नहीं होती, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम लोग नहीं करते हैं। एरर इज अ नाउन दैट मीन्स मिस्टेक। हर इज अ वर्ब दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एरर। हर जो है वो वर्ब है, ये इसी वर्ड से डिराइव हुआ है एरर से। सो अर मीन्स टू मेक मिस्टेक्स, इसका मतलब होता है गलती करना। अब देखिए, सिंस इट इज अ वर्ब, ये V1 फॉर्म होगी वर्ब की, तो इसकी आईएनजी फॉर्म क्या हो जाती है? ऑफेंडिंग, मिसबिहेविंग। एज एन एडजेक्टिव इट इज यूज्ड, ऑफेंडिंग, मिसबिहेविंग, राइट? आप सबने सुना होगा एक कोटेशन, टू अर इज ह्यूमन। तो अर इज ह्यूमन मीन्स टू मेक मिस्टेक। मेकिंग मिस्टेक इज व्हाट? इट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, कि अगर हम लोग ह्यूमन हैं तो वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक। ऐसा नहीं कि वी कैन नॉट बी फ्लॉलेस। हर ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई ना कोई गलतियां होती हैं, वो करता है गलती। ओके, सो दैट इज अवर नेचर, innate nature you can say. So erring we call to offending, misbehaving, it is used as an adjective. Okay, then we have the word albeit. देखिए, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो हमने नंबर ऑफ टाइम्स यूज किए हैं आर्टिकल में। albeit is what? It is a conjunction that means although. Albeit means what? Although. Okay? Then we have the word erstwhile. Erstwhile भी हमने अभी एक दो दिन पहले ही देखा था आर्टिकल में। This means former. It is also an adjective that we use for former. Erstwhile prime minister. Okay, erstwhile chairman. Friction is noun. Dispute, discord. Friction is a noun. So erstwhile we use for former. Then we have the word onus. देखिए, ये सारे वर्ड बहुत बार यूज हुए हैं। आई होप यू ऑल शुड नो erstwhile, onus, albeit। ये अब आपकी टिप पे हो जाना चाहिए इफ यू आर अ रेगुलर, like if you attend these sessions regular. Okay, so onus we call to responsibility. And what is the meaning of the word onerous? So many times I have told, जब भी मैं onus discuss करती हूँ तो I always discuss the word onerous. Very good, Usan, absolutely correct. What is the meaning of onerous? Quickly, anyone who can tell me the burdensome? Very good. It is burdensome. Burdensome, that is called onerous. Yes. And mandate, this we use for, it is a noun. Mandate we use for decree. What is the meaning of decree? Cumbersome. Yes, you can say, Priyanka. Yes. What is the meaning of the word decree? This decree word also I told you. ये अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया decree word. Stringent, strict, yes. Order, yes. Decree means order. Correct. Decree doesn't mean cancel. Decree means order. Yes, dictum, very good. Dictum, decree, these all are what? These are synonyms. Dictum it is. Yes, statement, all these things. Correct. Now, we are coming to the most important segment. As I said, in today's article, you are going to get a number of idioms and phrases. आज के आर्टिकल में आपको idioms and phrases बहुत सारे मिलेंगे, तो होमवर्क भी आज ज्यादा होने वाला है. Okay. So the first is pave the way. It is very common. बहुत बार हमने किया pave the way. Pave the way means to facilitate. It means to make easy for something to happen. आप किसी चीज को इजीली होने के लिए यू आर पेविंग द वे फॉर दैट। आप रास्ता बना रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग अ वे ताकि कोई चीज आसानी से हो जाए। सो दैट इज कॉल्ड पेव द वे। यस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो बार बार आपके फिलर्स और क्लोज टेस्ट में भी आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट ऑल्सो। यस, टू मेक इजी, टू मेक समथिंग इजी, टू फैसिलिटेट समथिंग सिंपल। किसी भी चीज को फैसिलिटेट करना, उसको इजी बनाना, दैट इज कॉल्ड पेव द वे। आई एम पेविंग द वे फॉर योर सिलेक्शन। These sessions are paving the way for your selection। कि ये जो सेशन है ये आपके लिए थोड़ा सा मतलब मैं इजी कर रही हूँ ताकि आप जल्दी क्वालिफाई हो जाए। So these are the usage of pave the way। Then weather the storm। weather the storm, देखिए इसको थोड़ा सा idiom को ना, in case, देखिए it is not possible to learn everything।
इडियम एज यू नो कि इट डजंट कैरी नॉर्मल मीनिंग, इडियम का हमेशा हिडन सेंस आता है, ये लिटरल मीनिंग कैरी नहीं करता। हिडन सेंस कोई आउट बॉक्स नहीं आता है। अब जैसे स्टॉर्म आपको पता है तूफान, स्टॉर्म का मतलब पता है तूफान। वेदर इज यूज्ड एज अ वर्ब हियर, वेदर इज व्हाट इट इज यूज्ड एज अ वर्ब हियर, इट इज नॉट अ नाउन, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सो इसको वेदर को आप वेदर्ड भी कर सकते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। So weather the storm means to deal with a difficult situation without being damaged much. कि मतलब बिना ज्यादा डैमेज फेस किए हुए, बिना ज्यादा लॉस फेस किए हुए, यू आर फेसिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यू मैनेज टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वेदर द स्टॉर्म। तूफान आया था आपकी लाइफ में, तूफान का मतलब क्या होता है जनरली? डिफिकल्टी। तूफान बेसिकली किसको कहते हैं? डिफिकल्टी। तूफान आया था आपकी लाइफ में, बट यू इजिली मैनेज दैट, उससे ओवरकम कर गए विदाउट गेटिंग मच अफेक्टेड, सो दैट इज कॉल्ड वेदर द स्टॉर्म। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, विदाउट बीइंग मच अफेक्टेड, कि आपको बहुत ज्यादा। वेदर एज अ वर्ब मीन्स हियर you can say keep survive, whether here as means survive. Then we have the idiom that is called crack the whip. Now here crack is also a verb. Yes, yes. Crack the whip means whip, you know, whip basically we call to चाबुक, आप समझते हैं? Basically we call to चाबुक, okay? वो जो हॉर्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, that is called whip. So crack whip means use the authority. Authority here means what? Power. You are using your power, you are using your authority to make someone behave in a disciplined way. कि मतलब जैसे teachers they crack the whip, they use their power to bring discipline in the classroom or in institution. So crack the whip means the same thing, to use your power or authority to make someone behave in a disciplined way. तो किसी को आप disciplined way में काम कराते हैं, that is the noun weather, real climate temperature, in that is the meaning of noun, okay, weather. Then we have in the dock. In the dock we call to in trial, not fully fit and out of action. This we basically use for criminal. Generally in the dock we use for criminal कि if a criminal is still under trial, he has not been exonerated, तो उसको पूरी तरह से exonerate नहीं किया गया है, so that is called in the dock, in the trial, अभी भी trial में चल रहे हैं। Not fully fit and out of action, कि ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से out of action हो चुके हैं या fit हो चुके हैं, that is called in the dock, okay, in trial. Then we have status quo, ये सबको पता होगा। Status quo we call to existing, someone behaves means here it is make, to make someone behave. Acha, you are talking about this thing, Naveen. So make is what? It is followed by bare infinitive, so it is V1. You can't write S here. Okay, you can't write S here. Okay, so use the put to make someone behave, because it is bare infinitive, it will be V1 only. Naveen, is it clear to you? Now, status quo we call to existing social or political state of affairs. Yes, you can say for namesake only, but yes, जो भी social, political, religious है, that is called status quo. Yes, you can say. Yes, Saurabh. And the last is put the house in order. देखिए जितना vocab देखा उतनी ही ज्यादा idioms भी मिल गए हमें. Put house in order means what? Put the house in order. Try to imagine कि आपका घर जो बिल्कुल chaotic situation में आप उसको proper से पूरी तरह से arrange कर रहे हैं. Means improve or correct the way in which one does things. Improve or correct the way, जिस way में आप अपने काम को करते हैं उसको improve करना. Try to do things in a proper manner, that is called putting the house in order. एक आपने देखा था put the cart before horse, means किसी भी चीज को गलत तरीके से करना, opposite way में करना, wrong way में करना, that is called putting the cart before horse. And put the house in order is just opposite, to improve or correct the way in which one does things. कि जिस वे में आप अपने काम को करते हैं उसको अरेंज करना, प्रॉपर वे में करना, दैट इज कॉल्ड पुट द हाउस इन ऑर्डर, राइट? सो ऑल दीज idioms we have. Now phrasal verbs, right Prasenjit, you can say absolutely correct. Hand over we have, hand over सबको पता है, we always say hand over, hand over. So hand over we call to pass responsibility to someone else. I have one question, what is the difference between hand over and hand down?
because kahin na kahin hand down also we use for pass on only. Yes, Usan, you can say. Right. Now, quickly tell me, anyone, what handover also means pass on the responsibility to someone else, and hand down also means pass on. But can anyone tell me what is the difference between hand over and hand down? Can I say I handed down my work to my colleague? Very good, Arju. Absolutely correct. Not surrender. Hand it down. Basically, we use for pass on to our younger generation, to our descendants, right? कि अपने से छोटे लोगों को कोई चीज अगर आप पास ऑन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हैंड डाउन. Handing down culture. Okay, so that is called pass on. In terms of passing on, I'm asking. So handover also means pass responsibility to someone else. ये आप basically देखेंगे ऑफिस वगैरह में we use this thing, handover, handover. 1 second, guys. Just let me 1 second. 1 second. Let me plug in my charger. I didn't turn. 1 second. Yeah, I'm back. Sorry for the interruption. Okay. So hand down, as I said, it means passing on to younger generation, and handover we use for this. Yes. And then we have hand back. Hand back we use for to give back or return. किसी भी चीज को वापस देना या return करना, that is called hand back. So these are the phrasal verbs of today's session. Idioms and phrases आज के session में काफी हैं. So I hope you are going to remember them. Okay? Use करिएगा ज्यादा से ज्यादा, तो you are going to remember them. Because आजकल idioms बहुत important हो गए आपके exam के लिए. Earlier it was these idioms were not that important for banking examination, but these days they are very important. So before starting article, we are going to launch IBPS PO crash course. अभी already we are running on IBPS PO batch. एक already आपकी run कर रही है. Okay? But we are going to start a new IBPS PO crash course from 1st of September. So those who missed, those who couldn't join IBPS PO batch, so this is a golden opportunity for you. Okay? So this is a golden opportunity for you. So you can use this. 1 second. So this is called this we are going to start from 1st of September. ये 1st of September से आपकी start हो रही है. So those who missed, जो इन लोगों ने नहीं join किया था, so this is the golden opportunity. You can go for this IBPS PO course. Okay, and then you have IBPS Clerk Crash course also we are launching. IBPS Clerk का भी crash course हम लेके आ रहे हैं. This we are going to start from 5th of September. 5th of September से we are going to start this IBPS Clerk. But as I always suggest, instead of purchasing these individual courses, it is better to buy Banking Super Elite. Banking Super Elite का course अगर आप purchase कर लेते हैं, तो you are eligible to attend all these courses that we have launched or we are going to launch. जितने भी courses आपके up होने वाले हैं, you can get that. Okay, आप सारी चीजें attend कर सकते हैं. Then this is the right time to buy any course. Yes, सबसे अच्छा time है, because till tomorrow we have this super selection sale where you are going to get flat 40% off, and if you use my code Saba, you will get additional discount. So remember to use this code Saba, and those who are interested, कोई भी आपका friend, relative कोई भी है जो बिल्कुल fresh से start करना चाहता है preparation, so of course you can suggest them to join this, and this is the right time because we have sale on. Okay. So this sale will be there till tomorrow only. So don't miss out this opportunity. Please join, and do remember to use this code SABA to get additional discount. Okay. So this is the general code that you can use everywhere for purchasing any mock test. कोई भी mock test purchase करना हो, कोई भी course purchase करना हो, PDF courses purchase करने हो, कुछ भी आपको purchase करना हो, you can use my code SABA for additional discount. And those who have not joined my Telegram channel, please join Learn English with Saba for updates on every session and for PDF. Updates or PDF के लिए, as I said, कि weekly vocab also I will try to send. So if you want all those things, so definitely join this Telegram channel. Now let's start article. फटाफट से article start करते हैं. देखिए, those who are regular, you will easily understand they will easily understand the article, because ये किसी ना किसी चीज का continuation है. Okay, ये इससे related एक article हमने last week में किया था. So I'm giving you 2 minutes. Just go through this. And in between this article discussion, I'm not going to entertain any chat.
ये पूरा का पूरा फोकस रहेगा आर्टिकल को एक्सप्लेन करने में, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Within 2 seconds, quickly go through this. I hope you all might have read. पढ़ लिया होगा सबने. फर्स्ट पैराग्राफ आई जस्ट आस्क यू टू रीड सो दैट यू गेट एन आइडिया कि हाँ क्या है, किस चीज के बारे में आर्टिकल है. आई होप यू नो कि ये जो फीफा एआईएफएफ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उससे ही रिलेटेड आर्टिकल है, दैट वी सॉ लास्ट वीक. तो फीफा एंड एआईएफएफ के बीच में कि फीफा इंडिया से एआईएफएफ मतलब ये जो भी था उनका जो होस्टिंग राइट था वो सारी चीजें उन्होंने मतलब हटा दिया था उसको, राइट. तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दैट आर्टिकल ओनली. उसके आगे का क्या प्रोसेस हुआ, इट इज बेस्ड ऑन दैट. ओके. स्पोर्टिंग ट्रबल मीन्स कि क्या ट्रबल है स्पोर्ट्स वगैरह में, जो ट्रबल चल रहा है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट. On Supreme Court terminating mandate means order, it is a noun here, to manage the football body. मीन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को मतलब जो उन्होंने एक सीओ फॉर्म किया था कि फुटबॉल बॉडी को मेंटेन करने के लिए, जब उन्होंने अपना टेन्योर वगैरह नहीं पूरा मतलब दे वर नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंट और उन्होंने एक बॉडी फॉर्म की थी एंड दैट बॉडी वाज मैनेजिंग द फुटबॉल बॉडी. एआईएफएफ को वो मैनेज कर रही थी. ओके. बट नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज टर्मिनेटेड दैट ऑर्डर. उन्होंने अपने ऑर्डर को टर्मिनेट कर दिया कि नाउ दैट सीओए वोंट मैनेज दिस एआईएफएफ. ओके. सो सुप्रीम कोर्ट डिड वेल. नाउ दिस इज अ लॉडेटरी स्टेप. ये एक लॉडेटरी स्टेप है कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है टू हैंड ओवर. टू हैंड ओवर मीन्स टू पास ऑन द डेली अफेयर्स ऑफ एआईएफएफ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. कि जो भी उनके डेली के अफेयर्स थे, डेली के काम थे, उन्होंने किसको पास ऑन कर दिया है, वो उनके एआईएफएफ के ही एडमिनिस्ट्रेशन को पास ऑन कर दिया है. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज ऑर्डर ऑन मंडे, कि इनका जो ऑर्डर आया था मंडे को, टर्मिनेटिंग द मैंडेट ऑफ द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर सीओए. सो दिस सीओए वाज फॉर्म्ड बाय सुप्रीम कोर्ट अर्लियर, but now they have terminated this committee of COA to temporarily manage the All India Federation is set to pave the way for ending India's international isolation. पूरी तरह से इन्होंने नहीं किया है, कुछ दिनों के लिए ही इन्होंने इसको ऑर्डर को हटाया है, मैंडेट हटाया है. ओके. And this decision, this order is set to pave the way for ending India's international isolation. कि ये जो इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट होने वाला था पूरे वर्ल्ड से, जैसे फीफा से उसको बाहर निकाल दिया गया था, तो नाउ इट इज गोइंग टू सेव द रेपुटेशन ऑफ इंडिया. इट इज गोइंग टू पेव द वे, इट इज गोइंग टू मेक इट इजी फॉर एंडिंग इंडियाज इंटरनेशनल आइसोलेशन. इस आइसोलेशन को अब वो खत्म करने में एक इंपॉर्टेंट स्टेप साबित होगा. ओके. World Football's governing body FIFA. You know FIFA is an international body. Suspended the AIFF on August 15. किसने अगस्त 15 को AIFF को सस्पेंड कर दिया था, citing undue interference from a third party. And the reason they gave for suspension was that AIFF, there is an intervention of third party and the third party was COA. तो third party कौन सी थी? COA थी. And made decision reversal conditional on the full repeal of COA's mandate and the handing back of AIFF's daily affairs to AIFF administration. That time when they withdrew, कि जब उन्होंने सस्पेंड किया था AIFF को, तो दे हैव केप्ट सर्टेन कंडीशंस. इन्होंने कुछ कंडीशन रखे थे. कि कंडीशन क्या था? पूरा जो है COA के जो मैंडेट है, दे वांटेड टू नलिफाई दैट. They wanted to nullify all those order and of that COA, and they wanted COA to hand back AIFF's daily affairs to AIFF administration. तो ये चीजें फीफा ने ही अपने उसमें रखी थी, कंडीशन रखी थी कि जब तक इंडिया ये चीजें नहीं करेगा, तो ऑफ कोर्स दे आर नॉट गोइंग टू include AIFF in that international group. Okay, so in FIFA you can say. Both these conditions have been met. Now, these two conditions that were laid down by FIFA, so both these conditions have been met. मतलब उसको पूरा कर दिया गया है.
alongside key amendments to the draft constitution as desired by FIFA. Now, there have been a few improvement, few amendments means changes. Amendments means changes इन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं एंड दोस चेंजेस हैव बीन डन एज पर फीफा रिकमेंडेशन कि जैसा फीफा डिजायर करता था जैसा वो चाहता था वैसे ही चेंजेस कर दिए गए हैं नाउ व्हाट आर दोस चेंजेस लिमिटेड इलेक्टोरल कॉलेज स्टेट एसोसिएशन नॉमिनीज की ये जो भी वेटिंग वगैरह है उसको लिमिट कर देना सिर्फ स्टेट एसोसिएशन तक instead giving players representation as nominated members in executive committee कि players को भी ये सारे रोल देना है so these are a few changes that have been done in constitution there are still points of friction means what discord कि ऐसा नहीं कि सारी चीजें एकदम फीफा के अकॉर्डिंग हो गई हैं नो स्टिल देयर आर सम कॉन्फ्लिक्ट स्टिल पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन मींस व्हाट कॉन्फ्लिक्ट्स ओके so there are still points of conflicts over calculation of term limits and one person one post principle in the draft constitution कि इन दो चीजों को लेकर के कि क्या टर्म लिमिट होगी और वन पर्सन को एक ही पोस्ट मिलना चाहिए इन सारे बातों को लेकर के स्टिल देयर इज कॉन्फ्लिक्ट अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है वहां पर but these are likely to unlikely sorry these are unlikely negative context to foil India's rehabilitation and its attempts to win back under 17 women's world cup hosting right देखिए ये सारी चीजें क्यों की गई हैं कि अगर फीफा एआईएफएफ को परमानेंटली सस्पेंड कर देता तो इंडिया को जो होस्टिंग राइट मिला था अंडर 17 and this under 17 hosting right this is going to be a game changing thing for India क्योंकि जब भी हम इस तरह के इंटरनेशनल गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं तो इट इज वेरी गुड फॉर इकोनॉमी बूस्ट करने में एक इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की एक रेपुटेशन बनाने में दीज ऑल थिंग्स हेल्प अ लॉट सो इंडिया डिडंट वांट दिस होस्टिंग राइट टू गो अवे इंडिया नहीं चाहता था कि ये होस्टिंग राइट उससे जाए सो दैट इज व्हाई इंडिया वाज बेंट ऑन कि वो बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड था कि जो भी चीजें मतलब फीफा के जो भी कंडीशंस वगैरह हैं सो इट एक्सेप्टेड एवरीथिंग सो यस ये जो भी फ्रिक्शन है दिस मीन्स वो जो फ्रिक्शन की बात हुई है पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन की जो बात हुई है वो बहुत सीरियस इश्यूज नहीं है सो ऑफ कोर्स दे आर नॉट गोइंग टू फॉयल मीन्स व्हाट डैमेज डिरेल कि ये जो है इंडिया का जो रिहेबिलिटेशन है कि वापस से अपने स्टेट को पाने का गेन बैक इट्स नॉर्मल स्टेट नॉर्मल रेपुटेशन उस पाने का जो उसकी एक कोशिश है ये जो भी कोशिश है उसको वो कर्टेल नहीं कर सकता उसको वो डैमेज नहीं कर सकता है because those are very minute things you can say these are apprehensions that the disbanding of the COA apprehension means what fear कुछ कुछ डर है कि disbanding you know कि scattering of COA कि जो COA जो है मतलब कि अलग हो गया है will have an impact on other sports such as hockey and table tennis which are also functioning under court appointed committees कि अब जैसे ही COA हट गया है disband हो गया है course it is going to affect other sports such as hockey and table tennis because they were also controlled by COA वो भी उन्हीं के अंडर में फंक्शन करते थे but it is to be noted that court merely ended the COA's tenure and did not nullify all years of his actions कि ये जो COA है ये कुछ दिनों के लिए just to gain the favor of FIFA सिर्फ FIFA का जो फेवर गेन करने के लिए किया गया है the court has just ended the tenure it did not nullify all of its action कि अपने पूरे एक्शन को खत्म नहीं किया है it is still going to regulate AIFF in some or the other way कहीं ना कहीं वो रेगुलेट करेगा ही करेगा it will still be guided by the draft constitution the COA helped finalize कि अभी भी AIFF उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन से गाइड किया जाएगा उन्हीं के अकॉर्डिंग वो फॉलो करेगा उन्हीं रूल्स को फॉलो करेगा द ड्राफ्ट दैट हैज बीन फाइनलाइज्ड बाय COA जो COA ने फाइनलाइज किया था albeit मींस although with few amendments हाँ थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस है but yes those that draft was framed by COA only right while the AIFF seems to have weathered the storm, the suspension, however brief it may turn out to be, has come at an enormous cost for the women of Gokulam Kerala FC, whose dreams of competing in their maiden AFC championship was shattered. No. AIFF
seems to have withered the storm means it seems to successfully deal with that situation कि ये जो भी situation था suspension वाला जो difficult situation था कि बिना ज्यादा damage के still it overcome that situation कि वो उस situation से बाहर निकल आया है. सस्पेंशन हाउएवर ब्रीफ इट मे बी, ये सस्पेंशन बहुत ज्यादा दिनों का नहीं था, हार्डली इट वाज फॉर 10 डेज, 1 वीक और 10 डेज का ही सस्पेंशन था, बट इट हैज कम टू एन एनॉर्मस कॉस्ट की वो बहुत ज्यादा तो उसका वो नहीं था, बट इसका कॉस्ट, इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? It has come at an enormous cost for the women of Gokulam Kerala FC because इनका एक ड्रीम था compete करने का AFC में. Their dreams were shattered because जब फीफा ने AIFF को मतलब सस्पेंड कर दिया था, so this match could not be played, so their dreams were shattered. तो इनके लिए कहीं ना कहीं ये सस्पेंशन बहुत ज्यादा harmful, you can say कि it was not that good for them. Okay. The Union Sports Ministry should play a more active role in ensuring that the athletes and the sport are protected. Now, here the role of Union Ministry becomes very important. यहाँ पे Union Ministry का role बहुत ज़्यादा important हो जाता है because they should ensure that athletes, Union Ministry should ensure that athletes and the sports are protected. कि ऐसा देखिए ये क्यों हुआ था? आई होप कि ये चीजें हमने पहले बताई हैं, डिस्कस की हैं कि COA जो है ये वाई सीओए वाज फॉर्म्ड, सुप्रीम कोर्ट को क्यों इंटरवीन करना पड़ा था? बिकॉज जो एआईएफएफ की बॉडी थी, जो उसके चेयरमैन थे, वो अपने टेन्योर से 12 साल से हट ही नहीं रहे थे. टेन्योर होने के बाद भी ही वाज नॉट he was reluctant to leave that post. So, because of all these things only that COA was formed. As Union Sports Ministry थोड़ा सा एक्टिव हो जाए तो of course we can ensure that our athletes and sports both are protected and no one will have to face such losses कि किसी को ऐसे लॉस फेस नहीं करने पड़ेंगे. The whole saga means story. देखिए पूरी कहानी क्यों है, इतना बड़ा जो इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी चीजें क्रिएट हुई क्यों हुई? Has its roots in erstwhile means former AIFF एस्टैब्लिशमेंट्स की जो उसके पिछले की गवर्नमेंट थी, जो गवर्निंग बॉडी थी, नॉन अडहेरेंस टू द नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड फॉर 18 मंथ्स, कि जो कोड ऑफ कंडक्ट था, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, सो जो पुरानी जो भी गवर्निंग बॉडी थे, दे डिडंट फॉलो दोज नॉर्म्स, सो दैट इज व्हाई ऑल दीज थिंग्स हैपेंड. ये इतना सारा क्योस खड़ा हुआ. अगर वो सारी चीजें रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते, ऐसी सिचुएशन कभी भी हमें फेस नहीं करनी पड़ती. एंड बिकॉज ऑफ दिस, ऑल्दो द सस्पेंशन वाज फॉर सम टाइम ओनली, थोड़ी ड्यूरेशन के लिए था, बट स्टिल पर्टिकुलर सेगमेंट हैड टू सफर अ लॉट. वो जो गोकुलम केरल के जो भी फुटबॉल लीग थी, दे हैड टू सफर अ लॉट. नाउ sports code is a government mandate regulation and thus the onus is on the ministry to crack the whip on erring federations. ये स्पोर्ट कोड क्या है? जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, ये गवर्नमेंट मैंडेट रेगुलेशन है. सो ऑफ कोर्स, तो अगर ये गवर्नमेंट मैंडेट रेगुलेशन है तो ऑफ कोर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री. कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की हो जाती है कि दे शुड यूज देयर पावर टू मेंटेन डेकोरम, टू मेंटेन डिसिप्लिन, कि उन्हें अपना पावर का यूज करना पड़ेगा ताकि वो डिसिप्लिन जो है मेंटेन कर सकें. किसके ऊपर? ऑन एयरिंग फेडरेशंस, कि जो भी ऑफेंडिंग है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनके ऊपर वो अपने पावर का यूज करके दे कैन ब्रिंग बैक एवरीथिंग टू नॉर्मल स्टेट, वो सारी चीजों को नॉर्मल स्टेट में ला सकते हैं. बट seemingly did not until the matter reached the highest court and it says that India would lose out on the World Cup. देखिए ये तब तक नहीं होता है इंडिया में, तो पता है कोई भी चीज है जब तक लास्ट स्टेज पे ना पहुंच जाए, जब तक उसका बहुत ज्यादा ग्रेव कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को ना मिले, तब तक कोई भी चीजें वापस से अपने प्रॉपर फॉर्म में नहीं आती. द सेम थिंग हियर, the यूनियन मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, इट डिड नॉट एक्ट, तब तक वो एक्ट नहीं करती की थी जब तक कि मैटर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद भी व्हेन दिस सस्पेंशन हैपेंड, कि जब इंडिया को डर लगने लगा कि नहीं वो वर्ल्ड कप की होस्टिंग राइट हो सकता है एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर इंडिया, कि जो इंडिया के लिए बहुत ही डैमेजिंग सिचुएशन साबित हो सकता है, देन एवरीवन केम इनटू एक्शन, तब सब लोग एक्शन में आए एंड देन दे टुक ऑल दीज स्टेप्स. अगर ये पहले हो जाता तो इतनी सारी चीजें होती ही ना. ओके. As in the case of AIFF, the Indian Olympic Association has been in the dock and the Delhi High Court duly placed it under a COA. कि अगर AIFF की तरह की बात करें तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी, वो भी क्या है, इन ट्रायल में ही है. ओके. और उसका भी कोर्ट किसमें चल रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट में. वो भी चीजें हैं, ठीक है, CO इसके ऊपर भी है. The Supreme Court has since ordered status quo for at least more
4 मोर वीक्स कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से स्टेटस को किया है। स्टेटस को मींस मैटर ऑफ अफेयर्स की उन्होंने 4 हफ्ते की वार्निंग दी है कि 4 हफ्ते में जो भी स्टेट स्पोर्ट्स बॉडीज हैं दे मस्ट रेगुलेट देयर एक्शंस, या जो भी उनके अंदर डिस्ट्रप्शंस वगैरह चल रहे हैं, तो दे मस्ट कम टू प्रॉपर चैनल, यू कैन से कि एक प्रॉपर वे में आ जाए। सो इट वुड बी प्रूडेंट वाइज फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स मतलब जो भी पार्टीज हैं, जो भी स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, तो यूज दिस टाइम कि ये 4 वीक का टाइम यूज करके टू पुट द हाउस इन ऑर्डर, कि जो भी उनके उसमें डिसरप्शन चल रहे हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है, सो दीज 4 वीक्स दे हैव गॉट, सो इन दीज 4 वीक दे मस्ट इंश्योर दैट एवरीथिंग कम्स बैक ऑन ट्रैक, की सारी चीजें वापस से ट्रैक पे आ जाएं। आई होप द आर्टिकल इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा आर्टिकल था, पहले भी हमने इससे रिलेटेड किया था आर्टिकल, सो आई गेस इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस, प्रफुल्ल पटेल, राइट, बिकॉज ऑफ हिम ओनली ऑल दीज थिंग्स हैपेंड। अगर वो अपने टेन्योर से टाइमली हट जाते तो ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम ना होती। देखिए, ये आर्टिकल इंटरनेशनल लेवल से ये काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे इससे होस्टिंग के बारे में पूछा जा सके, फीफा के रिलेटेड कुछ भी, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। सो और देखिए, नेक्स्ट टाइम से आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनी चैट इन दिस आर्टिकल डिस्कशन, फिर इससे क्या होता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाती है। यस, नाउ क्विकली टेल मी व्हाट इज रॉन्ग हियर, क्विकली टेल मी व्हाट इज रॉन्ग हियर। सिंपल एरर। यस, वेरी सिंपल। इंडिया, India's is incorrect. Who is saying real? See, it is India apostrophe है Supreme Court of India's order. India का order. Supreme Court. It is correct now. Yes. No idea. No idea. See, 2 plus V1 is a verb. It is an infinitive. I told you 2 plus V1, this manage is what? It is a verb. And this point I told you in the case of split infinitive के केस में मैंने बिल्कुल क्लियरली बताया था कि 2 plus V1 के बीच में अगर कुछ आ सकता है तो only an adverb can come. You can't use an adjective between 2 and V1. So yes, it will be temporarily. Temporary is what? It is an adjective. So we need an adverb. It will be simple. Temporarily manage the All India Football Federation. Simple. Adverb is required. In between 2 plus V1, we need only this adverb. Okay, simple. और इससे एरर्स आते बहुत हैं, आपके एग्जाम में भी बहुत आते हैं। स्प्लिट इन्फिनेटिव, दिस इज अ केस ऑफ स्प्लिट इन्फिनेटिव, जहां पर 2 प्लस V1 के बीच में आप एडवर्ब का यूज करते हैं। यस, एडवर्ब रिक्वायर्ड, करेक्ट। A is absolutely correct. Supreme Court of India's order. India के Supreme Court का order है. So this order is used as a noun here. Remember this thing. This order is not a verb here. It is a noun. It is absolutely correct. Finalize on Monday, terminating the mandate of Committee of Administration OA to temporarily manage the All India Football is set to pave the way. Finalize is a verb now. Final is adjective. Finalize is a verb. Bran is blocked from my side, so I'm not getting his message. Yesterday only I blocked him, so I'm not getting his message. So you guys also block him. Finalize. Let me come. Can you tell me where it is? Arju, just send me that screenshot. I will definitely clear it. Okay? तो एक बार screenshot भेजिएगा, मैं clear करूंगी. Finalize where it is, because here it will be very difficult to this. But finalize, generally we use it as a verb. Now we have to see the usage in the passage. So just send me the screenshot. I will definitely clear. Okay. Now, what is the tone of the article? Yes, Susan, what happened? What is the tone of article? Now, see, tone is quite mixed. You can ask Susan. See, initially, if you say the tone is laudatory, as I said, tone may vary passage to passage. Initial
the decision of सुप्रीम कोर्ट दैट इज लॉडेटरी, क्योंकि फॉरन से टाइम में आकर के उन्होंने ये चीजें की हैं, so that is laudatory. But sometimes it is, yes, it is what critical also, because we have criticized all these things. So it is critical also. Initial paragraph जो decision है that is laudatory. Okay, कि उन्होंने वो सीईओ को टर्मिनेट कर दिया, वो मैंडेट को वापस कर लिया, so that is what, that is laudatory. But yes, it is critical. क्रिटिसाइजिंग बहुत जगह क्रिटिकल भी हुआ है. Yes, and the last is suggestion. Last is suggestive. Correct. Absolutely correct. So all three paragraphs, they have different tone. So initial is laudatory, then we have critical, and the last is suggestive because we are giving suggestion कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ड्यूरेशन वगैरह दिया है, तो विद इन दैट मच टाइम वी हैव टू नॉट वी हैव टू लाइक स्पोर्ट्स बॉडीज दे हैव टू मेंट देयर एक्शन, कि उनको अपना एक्शन को फिर से वापस मेंट कर लेना चाहिए. So this was all about today's article. See, since we have so many phrases and phrasal verbs, idioms, everything, so I don't want you to frame sentences based on all those, because pave the way हमने पहले कर रखा है, hand down, hand over, that is normal thing. So I mentioned few important ones. So these four are homework because these are the new ones. So try to frame sentences based on these four verbs. Clear? Coming to San, coming to your doubt. Is it clear, everyone? So only these four idioms you have to use. These are homework, so please try to frame sentences based on these. Right? ये चार देख लीजिए आप लोग, होमवर्क रहेगा इसमें. सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, albeit. Okay, ये this is verb. This is verb. I got your doubt, Arju. COA helped finalize. Help is followed by bare infinitive. It is V1. Help is followed by bare infinitive. It is V1. Okay. But these are unlikely to fall India's rehabilitation and its attempts to win back. This its has been used for India. India's attempts to win back under 19. Arju, did you get? Hussain, did you get your point? Its is referring to India. India's attempt to win back under 17, because ये पूरे country nation के बारे में बात हो रही है, तो its has been used for India. And this finalizes verb because help is followed by bare infinitive. India's attempts to win back under 17 women's World Cup. ये इंडिया के रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज रिहैबिलिटेशन, कि उसको अपने जो भी खोया हुआ स्टेट है दैट ही हैज टू गेट बैक, एंड इट इज इंडियाज अटेम्प्ट्स टू विन बैक, बिकॉज पूरे नेशन के सपोर्ट की बात थी. ओके, so thank you guys, thank you everyone. We'll meet at 9 a.m. In today's 9 a.m. session also we are going to have excellent questions, so don't miss to join this 9 a.m. session. Okay, so mandatory it is, please. Thank you guys, thank you everyone.